Hello Gujarat. So we are here. So good morning guys. Welcome back to my channel. So this is Vedu. We are ready to go. Say hi baby. Hello. So आज हम लोग निकल रहे हैं as per the itinerary jungle safari and some more places. So let's see we are going. First we'll have breakfast and then we'll go. चलो. This is like you didn't even ask my consent before taking vlog. Violation of privacy समझती है तू? And I also need to show you the property. But ये जो consent and वो बोलती है don't take it personally, वो पागल है. तो otherwise मेरे viewers सोचेंगे कि मैंने तेरा consent literally नहीं लिया. But it is normal. And by the way, last vlog में मैंने बताया नहीं कि मैं किधर जा रही हूँ and where we are heading. So now in this vlog I'll definitely tell you. It was more important that we are going together. So मैं भूल गई थी कि किधर जाना है बताना है. So train journey के बाद we are meeting now. So let's have breakfast and then go. चलो. Come. So guys, let me give you a quick update. हम आए थे स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने और वहीं पे बहुत सारी जगह है घूमने जैसी. सो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल आफ्टर द ब्रेकफास्ट. सो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट हियर. सो इन ब्रेकफास्ट वी हैव खाकरा, few bananas and bread jam and sandwich. Bread jam butter bread butter. We need to show the property also. We do this property. Evening we'll show. भैया स्विमिंग पूल बंद है अभी, क्लीन हो रहा है. शाम तक हम भर के दे देंगे आप. ठीक है. और सुनो ना, मिरर नहीं है बड़ा रूम में. आईना है ही नहीं कुछ भी. वॉशरूम में है. हाँ वॉशरूम में है. बाकी वो उधर अगर किसी रूम में रहेगा तो वो शिफ्ट करवा सकते हो. रूम में है लेकिन वो कबाड़ के अंदर लगा हुआ है. अच्छा. बाकी और सब कॉटेज सब में है लेकिन वो रूम तो हमको चेंज करके दो फिर, क्योंकि मिरर ही नहीं है पूरा. करवा सकते हो. वो तो मैंने जैसे बोल के देखो. चलो लेट्स एंजॉय द ब्रेकफास्ट. देन हम लोग कहाँ जाते हैं देखते हैं. ठीक है. I am there in the frame. Did you even think about asking me before recording me? द होल डे एक सेंटेंस यू हैव टू बेयर इट. ठीक है. चलो सी यू आफ्टर द ब्रेकफास्ट. सो द ब्रेकफास्ट इज डन. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट स्पॉट. अभी देखते पूछते हैं कि हमारा क्या आइटिनरी है और हम कहाँ जा रहे हैं. दिस यू नीड टू आस्क वेयर वी आर गोइंग फर्स्ट. ठीक है. सो लेट मी गिव यू एन क्विक. नो आई डोंट वांट टू गो. समन्स बैग इज केप्ट हियर. कौन सा वाला ऑटो? पीछे वाला. अच्छा आई थॉट ये. This is cute. We'll do this. Yeah, I know. This matches to my dress. मुझे भी दिखा. रुक जा इसको इसका. So we are going with this. I'll give you what actually we are planning ना. हाँ. मैं कुछ बोल ही नहीं हुआ है. Nothing. अच्छा. So our day 1 itinerary is. उनको बता दे. One second. Okay. So now actually we came by train from Dadar to Ekta Nagar station. Right. Ekta Nagar station से We got actually picked हाँ we got a pickup from the tours and travel वाला person and he took us in a resort, quite a reasonable. अच्छा yes, good resort. और वहाँ पे tent है, so we are staying there which I showed you already. And now we are going where for sightseeing. So for sightseeing इधर scene क्या है that even if you have a travels and tour वाला person, They don't allow you हाँ inside. they are not going to take you everywhere. So that person has dropped us somewhere. इधर हम लोग को drop कर दिया and then यहाँ से अभी हम लोग खुद we have to figure out कि बस से अगर जाना है तो बस से you can go. वरना इधर ऑटो है. So we have booked an auto personal और अभी हम लोग पूरा घूमने वाले हैं. So let's start this. So hello Gujarat. So we are here. Let's start with this vlog. Excited.
Vedu is more excited for The swimming what swimming. we may or may not do at the resort. Actually, because resort का swimming pool is under maintenance, तो वो time लगेगा. Let's see. Let's be hopeful. Hopeful है. सो गाइज आरोग्यवन तो देखे हो गया है. अगर आपको आरोग्यवन का पूरा वीडियो देखना है तो मैंने कमेंट डाउन की है लिंक, प्लीज़ आप देखिए वहाँ पे. तो ये ऑटो है जिससे हम घूम रहे हैं, या फिर आप ऐसी बस सर्विस भी ले सकते हो जो काफ़ी हद तक फ्री होती है. तो यू कैन सी कि हम लोग आरोग्यवन कर लिए है, बर्थ प्लेस, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स खलवानी इको. And their guide is also really nice. हाँ, They guide explain is- almost everything to you. So it's better you have that person driving the golf cart because then he says everything. हाँ, you rather can than walk you also. wandering around. हाँ, if you are walking, you will not get so much information. You right. need guide. Yeah, correct, And correct, it's correct. really good for kids, like probably 9 or 10, because they'll also retain a lot of things the guide is saying. So worth visiting once, definitely. Vedu give thumbs up. So let's go to the next point. So this is the next spot, that is Khalwani Eco Tourism. So Khalwani Eco Tourism, let me show you. This is the entrance. Vedu is waiting for me and they went. So kind of you. Chalo, let's go. खलवानी इको टूरिज्म. हाँ, अच्छा हाँ, राफ्टिंग. Vedu, you should try rafting in the north. We'll go sometime there because it's a huge place. He took you? He didn't. Acha. So this is what just. Oh, this is like bridge. हाँ चल चल. हाँ अम्मा, क्या डर रहे तू, चल. चलो let's walk here. Oh, lovely. Wait a second, I'll show you the things. चल पूछते थे. Even I am not wearing appropriate हाँ. clothes for rafting, but still I saw that little cliff ना. It will be fun. और मुझे आता भी नहीं है इसमें. करना कुछ नहीं. तो swim क्या? स्विमिंग क्या करना है इधर, हमारा राफ्टिंग करना है. स्विमिंग डूबना है क्या? तो मैं तो डूब जाऊंगा इसमें जाऊंगा तो. पूछते. मुरलीकांत पेटकर also can't remember. Somehow he wants to go in the water, हाँ. and now he cannot go because at the age of 10 you are not allowed To do river rafting. to do river rafting. ठीक है ना वेदू? 4 more years. We'll come back and we'll do river rafting somewhere. In Maharashtra there are plenty of places. No, to do. not you go. Let's go in the north. हाँ, north में जाके. ऋषिकेश. ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग हाँ करेंगे. यार, और वी ऋषिकेश देखा भी नहीं है. हमने गंगा आरती वगैरह कुछ नहीं देखा. हाँ. बंजी ऑल्सो यू डू विद एट दैट एज ओनली. 4 साल बाद ही जब बंजी कर ले, साथ में सब हो रिवर जाए. राफ्टिंग, बंजी, एवरीथिंग. One birthday we'll take. Zip 14th lining. birthday we'll take Vedu for doing all that. बंजी, बट रिवर यू नीड राफ्टिंग. टू, क्या बोल रहा था, 100 kg के ऊपर तो लोग लेके जाना. अंदर वैसे केजी के अंदर होना चाहिए. अंदर होना चाहिए. अच्छा. Cannot be more. One person cannot be more than 100 kg. ओके, वो तो ठीक है फिर. तुम दोनों का वो स्ट्रेस तो नहीं है ना? नहीं. हाँ. So now
Khalwani Eco Camp Is done. and now is done, and now we are heading to Dam viewpoint. Dam Viewpoint And then Valley of Flowers. and Valley of Flowers. Valley of Flowers, we'll see it. I have higher expectations. Chalo, let's go. So the next point is Dam View. So let's walk. It's a 50-meter walk, and now we'll see the dam view. Hey, what is the name of the dam? Dam View. Sarovar. Sarovar Dam. Chalo, let's see. Electricity also you can hear now. This noise. तू सुन रही है this sound? Generation. I wish I could swim in that. No, you can't. This is generation of electricity. Hydroelectricity. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് electricity ഉണ്ടാക്കുക. Turbines. How? So, explain. Start, Divya. So basically, Water falls on a turbine. Turbines. Which rotates. Okay. So the flow of the energy, the energy will get converted into electricity. Rotational energy, which in turn gets converted into electricity. So can you hear this sound? This is electricity sound. Really? Grr, 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 grr. That's why there's smoke. Smoke? No, that's not smoke. That's water. Water body. So what you get out of this is electrical energy. ഈ യൂണിറ്റ് അതിനാണ് മനസ്സിലായോ? ഇതിനാണ് Produces, so these wires are connected to this, and then they are. Wires are not connected. Wires are connected to turbines. Turbines. And then the turbine, then this whole process starts. What is the use of dam? Two I know it. First is to store water, and second you can do this hydroelectricity. Electricity. Hydro meaning hydro is a water. Water से जो electricity is we can produce, that is hydroelectricity power station. ആണിത്. ഇവിടുന്ന് പല സ്ഥലത്തോട്ട് പോകും. Clear? So this dam is used to make hydroelectricity. Maybe for water storage also this they can use na. Multiple. Amma will be now googling. इनको information चाहिए कि नहीं? हाँ दे चल. Mama, you should marry. What you should? Marry Google. Sardar Sarovar Dam, built on the Narmada River, Kevadia district. Okay. Okay, this is basically part of Sardar Sarovar project, which covers 4 states: Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, and Rajasthan. This is also the largest dam in Gujarat. 2011, on top of the Sardar Sarovar Dam, the government of Gujarat has announced plans to generate solar power. So apart from hydroelectricity, there are also plans to generate solar power. And one more use you said, that is for irrigation. So basically it is targeting almost 70% of the drought areas of Gujarat. So irrigation of those places. This is something new. Yeah. Dams are new for me, that's but so the big. information is. Yeah. Vedu, can you see that cactus garden? Yeah, there. I think we are going to go there. I want to put a cat. Chalo, let's. So after that, this dam, Sarovar Dam, we left और अभी हम लोग आ गए यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स देखने. एक्चुअली वैली ऑफ फ्लावर्स को थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर भी हम लोग विल ट्राई टू फिनिश इट अर्ली, क्योंकि उसके बाद हमको जाना है. हमारा टिकट एक्चुअली स्टैचू ऑफ यूनिटी का 4:30 को है.
सो इफ़ यू आर कमिंग टू वैली ऑफ फ्लावर्स, इसका बंद होने का टाइम 5:30 है. सो मेक श्योर यू फिनिश दिस बिफोर दैट. मैं क्या करूँगी ना कि इसका ना आइटिनरी आपको मैं बना के दूँगी कि हाउ व्हाट यू कैन डू एट द एंड ऑफ द ट्रिप. सो इट विल बी हेल्पफुल 2 दिन 3 दिन वॉट एवर इट इज़. So now Valley of Flowers starts like this, artificial flowers, but let's see whether what we will see. Valley of Flowers के बाजू में यूनिटी ग्लो गार्डन है, but we have our tickets यूनिटी ग्लो गार्डन का in the evening. So अभी हम लोग देखेंगे Valley of Flowers and then we'll go to the Statue of Unity and then Unity Glow Garden. You can see the Statue of Unity थोड़ा बहुत यहाँ से. Lovely. Now there's one point I'll show you from Valley of Flowers कि जहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत अच्छा दिख रहा है. Just give me 1 minute so that I can roll my camera and show you. See. बैक कैमरा से दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है. This camera is not doing justice for what I can see with my eyes, but it is really beautiful. So this was all the natural sound and बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था. So we thought of just sitting and resting here because हम बहुत घूमे थे सुबह से. And then इस vlog का next part मैं वापस डालूँगी. So I hope you are liking it. Thank you so much for watching. Bye everyone.